નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આમ તો ક્રિકેટની મોસમ ચાલે છે. ગઈકાલે અમદાવાદની મેચ ધોવાઈ ગઈ, આપણે શું જાણીએ છીએ. આજે પણ એક મેચ છે અને હવે ધીમે ધીમે આઈપીએલ પણ એના અંત તરફ આગળ વધી રહી છે. પણ આજે ટેનિસ વિશે વાત કરવી છે, કારણ કે ટેનિસ એક એવી રમત છે કે આજકાલ છોકરાઓને ખૂબ એમાં રસ પડે છે અને ધી વોન્ટેડ ટુ જોઈન, અથવા તો કેરિયર તરીકે પણ ટેનિસને લેવા માટે ક્યાંક લોકો ડેફિનેટલી પ્રયત્નો કરતા હોય છે. ઘણી બધી એકેડેમી ચાલે છે, ઘણા બધા ચેમ્પિયન કોચિસ છે આપણી પાસે. અને દેટ ઇઝ હેપનિંગ એક્રોસ ઇન્ડિયા. એવું નથી કે માત્ર ગુજરાતમાં છે, દિલ્હીમાં પણ છે, બાકી બધી જગ્યાએ પણ છે. આજે ટેનિસ વિશે વાત કરવી છે. એની બંને બે ખેલાડીઓ અંડર 16 ઇન્ડિયા નંબર 1 છે. આ બંને ખેલાડીઓનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ ધ શો. એમની સાથે ચર્ચા શરૂ કરીએ પહેલા એક નજર નાખીએ અહેવાલ. યુવાનોમાં ક્રિકેટ પછી કોઈ રમત વધુ લોકપ્રિય બનતી હોય તો તે છે ટેનિસ. ભારતના ઘણા ટેનિસ સ્ટાર્સે વિશ્વ ફલક પર પોતાની મજબૂત હાજરી નોંધાવી છે. વિવિધ ટુર્નામેન્ટ્સ અને ઇવન ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં ભારતના ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. હવે ટેનિસની રમત સ્કૂલ, કોલેજ, સ્ટેટ, નેશનલથી ઇન્ટરનેશનલ સુધી પહોંચી છે. ભારતના ખેલાડીઓ માટે લોકપ્રિય બનતી ટેનિસની રમત સાથે ઘણી એકેડમી પણ કાર્યરત થઈ છે. અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં એવી ઘણી એકેડમી છે જ્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કોચેસ અને સપોર્ટ સ્ટાફ ખેલાડીઓ માટે મહેનત કરે છે. ગુજરાતમાં તો ગુજરાત સ્ટેટ ટેનિસ એસોસિએશન પણ ઘણું કાર્યરત છે અને અલગ અલગ વય જૂથના ઉચ્ચ કક્ષાના ટેનિસ ખેલાડીઓ તૈયાર કરાય છે. ટેનિસનો પ્રચાર અને પ્રસાર માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ અન્ય રાજ્યોમાં પણ છે. એટલે આ રમતને લોકપ્રિયતા મળે તે સ્વાભાવિક છે. लेट मी स्टार्ट विद निशांत. निशांत, टेनिस को आपने कैरियर बनाया है और खास करके टेनिस में जो आप इस तरह इस वक्त जो खेल रहे हैं वो बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. खास हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये जानना जरूर चाहते हैं कि अगर क्रिकेट के सिवा कहीं जाना है तो कैसे जाए, क्या करे, कहाँ पर सीखे और क्या ये खेल में हम रुचि या तो दिलचस्पी ले सकते हैं कि नहीं. वो सभी बातें आकर दिखती है. चलिए कुछ आपसे जानते हैं. निशांत, आपने कैसे ये तय किया कि चलो हम टेनिस ही करेंगे? वाई टेनिस? तो सर सबसे पहले कि जैसा कि पहले तो नमस्कार सभी को. और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में जो नंबर 1 स्पोर्ट है ऑब्वियसली क्रिकेट है. क्रिकेट से हम सभी जैसे छोटे होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है आपको, तो सभी बोलते हैं कौन सा स्पोर्ट, तो क्रिकेट. तो इंडिया में आई थिंक इट वाज आई थिंक कि जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए टेनिस इज एक्चुअली अ ग्लोबल स्पोर्ट. तो जैसे मैंने अलग अलग काफी स्पोर्ट्स ट्राई किए, तो उसके बाद आई रियली लाइक प्लेइंग टेनिस. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 7. तो मैं जाता था विद माय uncle in a school. So that's how I started with the thing, and then I started playing local tournaments around the area. And then after playing local tournaments, when I did good, we started playing the All India Tennis Association tournaments. Then I started playing in India, around India, in India, and after that, then I started playing internationals. I got selected for to represent India. That will be talking better. Let's see. समर्थ, कैसे शुरुआत हुई? क्यों टेनिस, क्यों क्रिकेट नहीं, क्यों बैडमिंटन नहीं? समर्थ. मैं जब बहुत छोटा था, जैसे लाइक 3-4 years अराउंड, माय मॉम एंड डैड यूज्ड टू प्ले टेनिस. तो उस तरह से मुझे भी इंटरेस्ट लगा टेनिस में, क्योंकि वो भी खेलते थे, इसलिए फिर उन लोगों ने मुझे टेनिस में भेजा. तो कौन सी एज मीन्स के जब आप रैकेट देखे या तो नेट देखे तो आपसे बड़े बड़े होंगे. मीन्स इट विल बी हायर देन यू. हाउ डिड यू मैनेज टू प्ले एट दैट टाइम? I don't know. I used to play somehow for fun at that time. ओके ओके. निशांत कमिंग. अरे समर, थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा भाई. ठीक है. ओके निशांत, कमिंग बैक टू यू.
you're from Delhi, am I right? Yes, sir. How is the competition around in Delhi? Because in Ahmedabad, rather Gujarat, there's a stiff competition. बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है. दिल्ली में कैसे competition है? At the heart of the Delhi House. So we have so many players, so many new academies and upcoming players. Because if you look at it 10 years ago, majority of the tournaments जो होते थे वो southern part of India में होते थे. Like when I was under 12, I used to play the tournaments. I used to travel to Mumbai to play one local tournament in India. And now compared to before, now अब दिल्ली में हमारा हरियाणा में और अभी north side we have tournaments every week. So I think it has actually helped all the tennis players. They don't have to spend a lot of money in traveling and all that stuff. और इससे अलग आप देखोगे तो कंपटीशन ऑब्वियसली हाई होगा जब प्रमोट करेंगे टेनिस को, टूर्नामेंट्स जितने ज्यादा होंगे तो आई थिंक कंपटीशन इज वेरी हाई ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट दिल्ली एंड गुजरात. आई थिंक सर. Right. समर्थ, चलिए अगर हम बात करें गुजरात के अंदर खेलने की, तो गुजरात में पहले तो कौन सी टूर्नामेंट खेली आपने, कौन सा लेवल किया? देन यू मस्ट हैव गॉन आउट ऑफ गुजरात एंड देन आउट ऑफ इंडिया. कैसा रहा सफर? कब से मीन्स पहला यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद में कौन सा टूर्नामेंट खेला एंड यू गॉट द फर्स्ट प्राइज और वॉट एवर इट इज? समर्थ. एक्चुअली मैं जब 1 साल का था तब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, इसलिए मैंने मेरा पहला टूर्नामेंट मुंबई में खेला था. ओके. जब मैं 5 साल का था मैं अंडर 10 की एक लोकल टूर्नामेंट खेला था मेरे एकेडमी में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था. अच्छा. ओके. आफ्टर दैट फिर मैं अंडर 10 खेलते गया जब तक मैं 9 साल का हुआ. फिर मैं अंडर 10 में नंबर 1 हुआ. फिर मैंने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स चालू किए, अंडर 12, अंडर 14. So then I used to travel all over India to play those tournaments. Then from 13 years I started ITF tournaments, International Tennis Federation. तो तब मैं आउट ऑफ इंडिया जाने लगा टूर्नामेंट्स खेलने के लिए. तो ऐसे जब जैसे एज मेरी बढ़ते गई मैंने अपना लेवल बढ़ाते गया टूर्नामेंट खेलने में. वेरी गुड. गुजरात में कौन सा पहला टूर्नामेंट जीता? व्हेन डिड यू शिफ्टेड टू गुजरात? Like 3 years back in 2021 मैं गुजरात आया ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद में. Okay. Who is your trainer? Who is your guide? Who is your philosopher? Roger Federer. No, that is. I'm talking about the coaches under whom you are learning right now. Right now I'm learning under Shrimal Bhatt sir from the past 3 years, and he's giving me a lot of personal attention right now. And because of him and his team, I've been able to be here right now where I am. Right. The second thing, how good गुजरात का टेनिस कितना अच्छा है अगर हम देखें, क्योंकि आज से कुछ 5-10 साल के पहले तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस वक्त जो देख रहे हैं हम लोग चारों तरफ एकेडमी खुली है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात भी काफी हेल्प कर रहा है. तो इस वक्त अगर टेनिस के समर्थ के सिवा अगर किसी खिलाड़ी का नाम देना है, 2-4 खिलाड़ियों का, तो किसका नाम आपके जवाब पर आएगा? जैसे लाइक 3-4 मेंस के प्लेयर है, जैसे आर्यन शाह, ध्रुव हिरपरा, माधविन कामत. फिर मेरे एज ग्रुप के 1-2 प्लेयर है, व्रज गोहिल करके. तो ये सब टॉप लेवल पे अभी मेरे साथ खेल रहे हैं. और मेंस व्रज गोयल मेरे साथ अभी टॉप लेवल पे खेल रहा है जूनियर्स में. और माधविन कामत, ध्रुव हिरपरा और आर्यन शाह भी मेंस में खेल रहे हैं. एटीपी फ्यूचर्स वो सब. निशांत, टेल मी वन थिंग, आप बताइए किस तरह का आपका सफर रहा टूर्नामेंट वाइज? अगर देखें अंडर 16, अंडर 18, फिर देन यू मस्ट हैव प्लेड स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल. कैसा रहा सफर? कहाँ से कहाँ पहुंचे आप? So obviously everyone जो भी है हमारे players हैं सब start करते हैं local tournament से. So obviously performance is a big and who was your coach? That also you have to mention. Okay, so I've actually changed a lot of coaches, but जो मेरे main जो coach हैं वो है Australian coach Doug Hill sir. मेलबर्न में वो कराते हैं training जब मैं जाता हूँ सर उनके पास. So my coach is Doug Hill from Melbourne, Australia. I train at KIMG, Young International Management Group. So they specialize in injury prevention and training facilities and everything.
तो कैसे आफ्टर दैट विच टूर्नामेंट्स यू पार्टिसिपेट? So, I've played all the tournaments. I've won nationals myself in singles and in doubles. And I was selected for road to Japan to represent India in international to the World Junior Finals for under 16. And I also won the sportsmanship award in that tournament. I also represented India in the World Junior Finals in under 14s. I also represented India in Doha, Qatar. So all Okay. of this is based on rankings. When you are top 3 in the nation, the AITA, All India Tennis Association, they take you for tournaments. You're selected to represent the country, and then you go around places. फिर आप खेलते हैं वहाँ पे जाके. ओके समर्थ साहब, मैं अभी देख रहा था आपकी सीवी आपने भेजी, कुछ 4 पन्नों की है। इतनी लंबी सीवी है कि मैं पढ़ते पढ़ते मैं मुझे लगा कि चलो मैं प्रोग्राम में पूछ लूंगा कि कैसी कितनी कितनी टूर्नामेंट्स आपने खेली है इंडिया में और abroad, कि जहां पर यू हैव गॉट एक्नॉलेजमेंट कि चलो भाई हाँ ये अच्छा टूर्नामेंट गया मेरा। विच आर द टूर्नामेंट्स यू हैव प्लेड? अब्रॉड में जब मैं मेरी पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था मॉरिशस में, वो मैंने बहुत अच्छा किया था। उसमें मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन आया था कि हाँ मैंने अच्छा किया मेरे पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। Then one international tournament I played in India. Sorry, 2 international tournaments. One in Ahmedabad last year, which I won the J30 ITF singles, and one this year in Gurgaon, जो मैं जीता था J60 ITF. और प्लस मैंने डबल्स में भी बहुत सारे टूर्नामेंट में इंडिया में और अब्रॉड में बहुत अच्छा किया है। ओके अब अगर हम देखें कि यू आर ट्रैवलिंग फॉर डेविस कप, कहाँ जाना है, कब जाना है और डेविस कप की कैसी कंपटीशन थी और किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ? अभी जो मैं डेविस कप के लिए जा रहा हूँ, मैं फ्राइडे को निकल रहा हूँ और हमारे मैचेस मंडे से चालू होंगे। और ये पहले एशिया में क्वालिफाइंग होगा, तो 16 एशियन टीम्स के बीच में क्वालिफाइंग होगा। उसमें से जो टॉप 4 आएंगे विल बी सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड ग्रुप व्हिच विल बी इन Right, and rest means after how many days you will be there for the tournament, Davis Cup? Yes. Okay, Nishan, coming back to you. Internationally acknowledged टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी टूर्नामेंट है कि जहां निशान को ऐसा लगा कि यार नहीं अच्छा टूर्नामेंट गया एंड यू नो गेटिंग दैट सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव डन वेल? निशान. Absolutely, sir. So there's so many tournaments actually there, but I think my favorite one is the J200 that I won in Cairo, Egypt, back in 2021. Because of which I went on to become number 1 in India after that tournament. So I think that is one of my favorite memories where I played in that tournament. I beat the top seeds, the guys from Poland, Russians, and all other players I defeated in that tournament. So I think that's one of my favorite memories. बहुत ही जबरदस्त और आपने उसे हराया हो. Yes, sir. Yes, sir. समर्थ. Yes, sir. हाँ बताइए कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी हो जो आपसे रैंकिंग में भी बड़ा और जिसको आपने हराया हो? ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे नाम ले सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए. अभी 2 महीने पहले गुड़गांव J60 फाइनल में मैंने एक 200 रैंक प्लेयर अर्जुन पंडित को हराया था, टॉप सीड था उधर का टूर्नामेंट का, और I beat him in 3 sets. And then there are many players from abroad which I've beaten who are higher ranked than me in the international rankings. अच्छा निशान, टेल मी वन थिंग. Yes, sir. किसका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? विच टेनिस प्लेयर यू आर फॉलोइंग और रादर यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक हिम लाइक? So obviously, I think everyone knows Novak Djokovic from Serbia. He's the number 1 tennis player in the world. He's been number 1 for so long, and it's not just because of his tennis that I envy him. I think what he does off the court as well, how he gives back to the community, and what he does for other tennis players. Like he formed his own association
and all the other things that he does off the court, I think makes him a better tennis player and makes me like him even more. चलिए, ये बात तो हुई फॉरेन प्लेयर्स की। कोई इंडिया का भी खिलाड़ी होगा जो आपको इम्प्रेस करता होगा, Yes, या sir. तो Yes, करती sir. होगी? Absolutely, sir. Rohan Bopanna, sir, is one of an inspiration. He just turned 44, I think, and he's number one in the world in doubles. So obviously, he's made a strong statement that age is just a number, and if he can do it, I think all of us can work hard, and get better at the sport. समर्थ, कौन सा खिलाड़ी है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, या तो आप उसके जैसे बनना चाहते, चाहे बैकहैंड हो, फॉरहैंड हो, नेट सर्विस हो, कुछ भी? अगर आप जो शॉट्स की बात करें, सर्टन शॉट्स है ना, ये बहुत ही अच्छे, इनके बैकहैंड बहुत अच्छे, इनके फॉरहैंड बहुत अच्छे, इनकी वॉलीज बहुत अच्छी होती। हु इज दैट प्लेयर? It's Roger Federer, sir. I became a single-handed backhand just because of him, and I love his creativity on the court, like his volleys, his drop shots, his serve, the creativity and the variation he brings on the court. I think no one can bring it. Right. Nishant, tell me a few ladies players, female players rather. Yes, sir. So I think for me, my favorite would be Ankita Raina from Gujarat itself. She's one to watch. I really like watching her matches and how well she's doing on the tour. So I really like her game style, how she's like aggressive baseliner. She hits the ball hard, goes in and plays out the point. And I think I'm very happy to see how good she's performing and she's doing on the tour. समर्थ, डेविस कप का सिलेक्शन कैसे होता है, या तो कैसे हुआ आपका सिलेक्शन? So this year they were like doing a round robin matches between the top 6 ranked India players. So in that, whoever wins the most matches, those get selected. So 3 players from those got selected, whoever won the most matches from the 6 players. तो नाउ यू हैव बीन सिलेक्ट। अच्छा, आपके साथ मींस हु अदर कौन दूसरे खिलाड़ी है जो आपके साथ सिलेक्ट हुए? One is Aradhya Kshitij from Bangalore and one is Ranveer Singh from North, I think from Delhi. Anybody from Gujarat? No, only these 3 players. Like me, Aradhya Kshitij and Ranveer Singh. ओके, निशान, टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाओगे? क्योंकि काफी कुछ चीजें आपने कर ली है, 4 पन्नों की सीवी बना दी है दोनों लड़कों ने, टेनिस प्लेयर्स ने। तो आई एम जस्ट वरीड कि आप कहाँ जाओगे? इतनी तो 4 पेज की सीवी तो हो गई। व्हाट इज नेक्स्ट? Sir, first thing I think I would like to say is sky is the limit. So obviously there's no stopping here, and अभी तो बस start किया है sir। अभी तो I think for me personally, I will be trying to get in the team for Asian Games. That is very big for me. I think it means a lot to represent your country and win a medal in the Asian Games. And I think I'll just take it from there. That's the next step for me. समर्थ, आप कहाँ जाना चाहेंगे? डेविस कप तो हो गया, चलो मान लिया कि आप डेविस कप में बहुत ही अच्छा किया, लेकिन then what is next? What you are dreaming for rather? My next short-term goal is to play all 4 junior Grand Slams next year in the main draw and do better in those 2, like quarterfinals, semi-finals in them. Is it specific training समर्थ आप कर रहे हैं? ये सब अगर आपको ग्रैंड स्लैम, जूनियर ग्रैंड स्लैम खेलना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन के साथ काम कर रहे हैं आप? Like yes, of course, as I said before, that streamers is giving me a lot of personal attention, and I even go to Germany for 3 or 4 months for training at the Alexander Vasquez Tennis University. Right. Okay, so अच्छा, tell me, अगर if you are aiming for very high, you need to practice a lot. कितना प्रैक्टिस दिन में चाहिए? कितने घंटे आप टेनिस कोर्ट पर जाते हैं और खेलते हैं? Sweating hard there. Like in a day, I play for like 4 hours tennis and 1.5 hour fitness, and then in the evening we have an hour of surf sessions. So total, I play around 4 or 5 hours of tennis and 1.5 hours of fitness. Okay, Nishant, tell me,
सपोर्ट कैसा है सर? गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है, या तो एकेडमीज का है उनका सपोर्ट कैसा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है, और टेक्निकली साउंडनेस की अगर बात करें, फॉरेन ट्रेनिंग की बात करें, या तो कहीं जाना है तो कैसा सपोर्ट आपको मिलता है financially, or even somebody is backing you up? Come on, don't worry, go. So obviously, I mean, I'm not going to hesitate or anything about saying. So compared to Gujarat, I think Gujarat obviously gives 25 lakh. They have different packages that they give to the players to support them for traveling outside India, playing tournaments, doing practices and stuff. But Delhi government, I don't think they have done anything for the junior players till now. But I'm hoping they will do something in the future about it. And I think it is a big issue that they need to, I think, focus on other than cricket and other sports. I mean, no offense to cricket, but I think other sports should be lifted a bit more compared to cricket. I think they should support us a bit more. Then how you manage these tours and going abroad and all that? कैसे So my academy in Melbourne, right? Where I train. So obviously they see that I am talented and everything. So they support me. Like for example, if the fees is $1,000 for 1 month, then they would cut it down to $500 because they know obviously I cannot pay $1,000 because my mom and dad, they are government school teachers. So obviously it's a bit hard, sir. So that's how the foreigners they help me a little bit with that. And my uncle lives in Melbourne, Australia. My dad's cousin. So I stay at his house to save some money, and that's how we're just managing right now. समर्थ, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है यहाँ पर? ट्रेनिंग फैसिलिटीज कैसी है? और अगर बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है तो किस तरह से आप जा सकते हैं? Actually, my state is still Maharashtra, so Maharashtra gives me like 2 or 3 lakhs per year, and which doesn't help that much, but yeah, of course. So, and when I go abroad, my father does it all, like he pays it. Oh, no, that is okay. But as long as the facilities are concerned, Gujarat facilities are up to the mark, or they are better than Maharashtra, or what you can say? Yes, of course, Gujarat's facilities are better than Maharashtra, and in the future, I'm planning to switch to Gujarat state, so I can get more support from the government. Right. Nishant and Samarth, both of you, all the very, very best. खैर यहाँ पर प्रोग्राम तो खत्म होता है, लेकिन आपकी कैरियर नहीं, आपको बहुत ही दूर जाना है, बहुत ही ऊंचाइयों को छूना है, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, निशांत एंड समर्थ. Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you for joining the program. I am very sure that जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे देखने वाले दर्शक लोग, उनको भी काफी कुछ जानने को मिला होगा. તો દોસ્તો, હાથી ટેનિસની વાત, આમ તો આપણે ક્રિકેટની વાતો કરતા હોઈએ, બીજી બધી રમતોની વાતો કરતા હોય, પણ આવા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ખેલાડી તમે વિચાર કરો કે કેટલી મહેનત કરે છે, 4 પાનાની સીવી છે, કેટલા બધા મેડલ્સ, કેટલી બધી ટુર્નામેન્ટ્સ રમે, અને આ ઉંમરે એક છોકરો જે અંડર 16 નંબર 1, એક છે અંડર 19, અંડર 18 નંબર 1, એન્ડ ધીસ ટુ, આ બંને કેટલી બધી ટુર્નામેન્ટો રમી ચૂક્યા અત્યાર સુધીમાં. સો મહેનત કરવી પડશે, મહેનતના જ ફળ સારા આવી શકે છે. સો લેટ્સ સી આપણામાંથી કોણ તૈયાર થાય છે, કયા ખેલાડી તૈયાર થાય. આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર. Thanks, sir.